So in our last lecture, we have started studying about the truth tables. We have started studying about the truth tables, which were been based upon a different connectives, right? तो जिसमें से हम लोग ने थ्री ट्रूथ टेबल्स हम लोग ने कंप्लीट कर दिए थे बच्चा, बराबर है? So starting with first, not. The other name for not is negation. And what is the hint for negation is? What is the hint for negation is? Negation का मतलब क्या होता है बच्चा? It is opposite. Opposite. If the statement is true, then its negation will be false. And if the statement is false, then its negation is true. Second, there comes or का दूसरा नाम is disjunction. और का दूसरा नाम is disjunction. And the symbol for or is V. बराबर है? अच्छा, in the truth table of or, there are total 3 columns. First column, it belongs to P. Second column, it belongs to Q. Third column, it belongs to P or Q. चलो मुझे बताओ, what are the entries for P? P का एंट्री बताओ फटाफट P का एंट्री बताओ. अरे वाह, वेरी गुड. इट इज TTFF. बताओ व्हाट इज Q का एंट्री? अरे वाह, वेरी गुड. इट इज TF. And what is the hint for or is? If any one of the statement is a true, then a result is true. Otherwise, it is considered to be as a false. बराबर है? तो चलो एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं ट्रूथ टेबल के साथ. यू हैव टू रीड द ट्रूथ टेबल. बताओ TT का, TF का, TFT का, FF का. अरे वाह, वेरी गुड. क्या बात है बेटा, वेरी गुड. नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू एंड, द अदर नेम फॉर एंड इज conjunction. Very good. And the symbol for and is ulta V. बराबर. With respect to and, what is the hint is? Both the statements are true, then a result is true. Otherwise it is false. बोला था मैंने ऐसा. तो in that case, चलो start answering. TT का, TF का, FT का, FF का. अरे वाह, क्या बात है भाई. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एंड, बच्चा लोग अपना एग्जाम्पल बाकी था, राइट है ना? टाइम की पाबंदी की वजह से हम लोग बड़ा एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर पाए थे. So let me start with the example. Let
let P be the statement let P be the statement in which X is rational, let P be the statement in which X is rational. Next line, Q be the statement, Q be the statement in which X is irrational, X is irrational. Now, what is your target is what you are going to do? You are going to combine these two sentences by using a connective and. चलो, can you try this? Can you try this? दोनों को तुम लोग and से combine करके मुझे बता सकते हो? But if you will try with and, you will get the answer as X is rational and irrational. Very good, Meher. Perfect. X is rational and irrational. बराबर है? X is rational and irrational. अच्छा, यहाँ पे श्रवणी, अमित, बड़ा तुम लोग ने ऑलरेडी स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था किससे? X इससे स्टार्ट किया था, बराबर है बच्चा? तो अगेन एंड अगेन देयर इज नो नीड टू स्टार्ट द आंसर विथ एक्सिस. एक बार एक्सिस बोल दिया, दैट इज परफेक्ट, बट सेकेंड टाइम फिर से वो रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब चल भाई मुझे ये बताओ फटाफट फटाफट. केस नंबर वन, सपोज इफ आई से दैट के एक्स इज रैशनल, एक्स इज रैशनल, बराबर है? तो बेटा एक्स इज रैशनल, अगर ये ट्रू है तो एक्स इज इरेशनल क्या हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट, एवरीवन पार्टिसिपेट. एक्स इज इरेशनल क्या हो जाएगा? फॉल्स. एंड जो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट कि एक्स इज रैशनल एंड इरेशनल. बेटा प्रैक्टिकली तुम लोग ही मुझे सोच के बताओ, क्या कोई भी नंबर रैशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों होता है क्या? नहीं होता है. तो रिजल्ट विल बिकम फॉल्स. करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो क्या है कि चलो एज्यूम करो कि इफ एक्स इज रैशनल, इफ इट इज फॉल्स, बराबर, एक्स इज इरेशनल क्या हो जाएगा? ट्रू. तो भी फाइनली एक्स इज रैशनल एंड इरेशनल, वो तो फॉल्स ही होगा. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया बच्चा कि यहाँ पे जब हम लोग ने देखा कि व्हेन ओनली वन स्टेटमेंट वाज ट्रू, बराबर, तो फाइनली जो तुम्हें रिजल्ट मिला वो तुम्हें क्या मिला? फॉल्स. जबकि एंड के लिए हिंट क्या है? एंड के लिए हिंट क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, then only the result is true, otherwise it is false. देखा तुम लोग ने?
After completing the third truth table, now there comes fourth one. अरे एक बार भाई मुझे बताओ तो सही कि विच इज द फोर्थ कनेक्टिव वाइफ. फोर्थ कनेक्टिव कौन है अपना? ये हुई ना बात. वेरी गुड दृष्टि. प्रणव वेरी गुड. Why it is none other than it is called to be as if then. बराबर. अच्छा, when we talk about the if then is called to be as if then is called to be as conditional or it is called to be as implication, or it is called to be as implication. And when we talk about the symbol for if then is one side arrow facing from left to right. If the given statement, if it is atomic, तो भाई एटॉमिक स्टेटमेंट के लिए तुम लोग उसे रीड करोगे if then. But if the given statement is a compound statement or it is a composite statement, so it is being called to be as a conditional or it is called to be as implication rule. And now let me start with the table. चलो सब लोग रेडी? चलो start with. So first column it is for the column P. Second column it is for the column Q. And third column is for, अब ये जो थर्ड कॉलम है ना बेटा, थर्ड कॉलम, दिस थर्ड कॉलम इट विल बी रीड एज नंबर 1 इफ P then Q. कैसे रीड होगा मुझे बताओ फटाफट. द थर्ड कॉलम इट विल बी रीड एज इफ P then Q. The second way of reading the third column is this will be read as P implies Q. It will be read as P implies Q. समझ में है? Both of them are the standard forms. But out of which we will prefer the second one, P implies Q. चलो भाई बच्चा लोग सब लोग रेडी. चलो फटाफट. So when you will start with the column of P, तो मुझे बताओ P का एंट्री क्या होगा? P का एंट्री it is called to be as a T.
एफ एफ टी टी एफ एफ। बताओ भाई क्यू का एंट्री क्या होगा? क्यू का एंट्री इट इज टी एफ टी एफ। एंड नाउ देयर कम्स द हिंट, देयर कम्स द हिंट। अब यहां पे ना हिंट में मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स बताऊंगा, 2 पॉइंट्स। देयर आर पढ़ाई के लिए 2 मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 2 points that I will explain, bro. है ना? You write down accordingly. Write down the hint. Number 1. Write down number 1. If both the statements are having the if both the statements are having the same truth values, if both the statements are having the same truth values, then the result is true. Both the statements are having the same truth values, then the result is true. एक मिनट स्टॉप। जब मैंने कहा कि दे आर हैविंग द सेम वैल्यूज, उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेम ट्रूथ वैल्यूज? सेम ट्रूथ वैल्यूज मींस इट इज टी टी एफ एफ। आई रिपीट, टी टी एफ का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। द रिजल्ट इज ट्रू। And the second condition is if the first statement is false, if the first statement is false, बराबर सब लोग बराबर ध्यान से सुनो। First statement is false and the second statement is true, then the result is true. Otherwise false. अब यहाँ पे बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि मैंने ट्रू के लिए तुम लोग को कितने कंडीशंस दिए? चलो फटाफट ट्रू के लिए बेटा मैंने कितने कंडीशंस दिए तुम लोग को? 2 कंडीशंस दिए, बराबर है। और 2 कंडीशंस क्या क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर हैविंग द सेम ट्रूथ वैल्यूज, then a result is true, and if the first statement is false and the second statement is true, then the result is true.
अदरवाइज फॉल्स। चलो बच्चा लोग फटाफट फटाफट मुझे आंसर दो। टीटी का टी, टीएफ का एफ, वेरी गुड, क्या बात है भाई। एफटी का टी, एफटी का टी, एंड फिर उसके बाद बेटा एफएफ का टी। अच्छा, एफटी का टी क्यों हुआ पता चला तुम लोग को? एफटी का टी क्यों हुआ पता चला बच्चा लोग? क्यों हुआ? क्यों हुआ फटाफट देखो। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज अ ट्रू, and therefore the result is a true. Therefore the result is true. चलो विद रिस्पेक्ट टू इफ देन फटाफट एक बार और बताओ। टीटी का जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में। टीटी का टी, टीएफ का एफ, एफटी का टी, एफएफ का टी। चलो आगे फटाफट नेक्स्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि चलो भाई लेट पी बी द स्टेटमेंट। Let P be the statement in which today is Sunday. Today is Sunday. अच्छा next, Q be the statement. Q be the statement. It is a holiday. By what is P? Today is Sunday. अच्छा what is Q? It is a holiday. अब भाई ये दो सेंटेंस को कंबाइन करना है बाय यूजिंग इफ देन। अरे वाह, यू पीपल आर रेडी विद द आंसर्स आल्सो, क्या बात है। इफ टुडे इज संडे दैट इज अ हॉलीडे। ओके, तुम लोग ने अपने हिसाब से बराबर ट्राई किया हुआ है बेटा, बराबर बराबर। अच्छा करेक्ट है बेटा, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा सा मैं उसको इम्प्रोवाइजेशन करूं बेटा, थोड़ा सा उसके अंदर मैं माइन्यूट चेंज करूं, ये सेंटेंस और परफेक्टली रीड किया जा सकता है। कैसे? if it is a Sunday, if it is a Sunday, then it is a holiday. If it is a Sunday, then it is a then it is a holiday. If it is a Sunday, then it is a holiday.
मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड निकाल दिया पता चला? I have removed the word today. Yes, बेटा. चलो, अब भाई मुझे ये बताओ कि if I talk about the different possibilities, different possibilities. Very good. Suppose assume करो कि today is Sunday. Today is Sunday. It is true. It is a holiday. That is also true. तो बच्चा लोग क्या ऐसा हो सकता है कि if it is a Sunday, then it is a holiday? ये बात तुम लोग मानते हो कि अगर संडे है तो हॉलीडे हो सकता है? फटाफट फटाफट टेल मी यस और नो. इफ इट इज अ संडे देन इट इज अ हॉलीडे. संडे है तो छुट्टी है. अच्छा, तुम लोग मानते हो इट इज ट्रू. अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि टुडे इज संडे, इट इज फॉल्स. इट इज अ हॉलीडे, इट इज ऑल्सो फॉल्स. बराबर है कि नहीं? तो भाई तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग ये बात एग्री करते हो कि टुडे इज, इफ इट इज नॉट अ संडे देन इट इज नॉट अ हॉलीडे? अगर संडे नहीं है तो हॉलीडे भी नहीं है. है कि नहीं बेटा? संडे नहीं है तो इसका मतलब हॉलीडे भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो माइंड सेट है बेटा कि संडे है तो हॉलीडे होना चाहिए. तो वाई इट इज ट्रू. चलो उसके बाद नेक्स्ट. अगर अगर मैं कहूं कि टुडे इज संडे, दिस इज ट्रू. इट इज अ हॉलीडे, दिस इज फॉल्स. बेटा, तो भाई मुझे ये बताओ, क्या ये बात तुम लोग मानोगे कि इफ इट इज अ संडे देन इट इज नॉट अ हॉलीडे? क्या ये बात तुम लोग से बड़ा हजम होगी कि संडे है बट हॉलीडे नहीं है? सर बिल्कुल नहीं होगी ये बात हजम हमसे. दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी फॉल्स स्टेटमेंट. और अगर मैं कहूं कि इट इज संडे, टुडे इज संडे, दिस इज फॉल्स. इट इज अ हॉलीडे, दैट इज ट्रू. तो क्या ये बात से तुम लोग एग्री करते हो कि इफ इट इज नॉट अ संडे, अगर संडे नहीं है तो हॉलीडे है? जरूरी है बेटा कि सारे के सारे हॉलीडेज तुम्हें संडेज की ऊपर ही आए? बैंक हॉलीडेज जो होते बेटा वो वीकडेज में भी तो आ सकते कि नहीं? अब ये देखो, पूरा का पूरा जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पे बच्चा मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं? ये देखो, जहां पे तुम लोग ने ट्रू का, जहां पे एग्री किया वहां पे मैंने ट्रू किया, जहां पे तुम लोग बड़ा डिसएग्री हुए वहां पे मैंने फॉल्स कर दिया उसे. चलो नो. नो. अब यहाँ पे सब लोग, तो सब लोग सुनो ध्यान से.
अब ये नोट में है ना बेटा, ये नोट में मैं तुम लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे अलग अलग तरीके से रीड कर सकते हैं वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू रीड द कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। तो चलो भाई नोट, और उसमें लिखना स्टार्ट करो मैडम। इफ अभी एक वर्ड, इफ write down in a symbolic form, if P implies Q, if P implies Q, जैसे मैंने symbolic form में लिखा है ऐसे लिखना, if P implies Q is a conditional statement, is a conditional statement, is a conditional statement, then the different ways, of reading a conditional statement, then the different ways of reading a conditional statement, different ways of reading a conditional statement are, चलो लिखना स्टार्ट करो। नंबर वन, मैंने अभी लिखा ही नहीं है, अब लिखूंगा रितांजलि, अब लिखूंगा, देखो वहां पे। नंबर वन इज इफ पी देन क्यू, मैं डिक्टेट कर रहा था बेटा सबको, देखो इफ पी then Q, if P then Q. Next, number two is